Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan, Radhe Jayo Radha Govinda, Radha Govinda Radhe Jayo Radha Gopinatha, Radha Gopinatha Radhe Jayo Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavate Sevaya Bhagavati Ruttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 4, entitled The Incarnation of Godhead, text number 12. श्रीमद् भागवतम स्कंद 11 अध्याय क्रमांक 4। इसके शीर्षक है राजा नंदी से त्रिमित द्वारा परमेश्वर के अवतार का वर्णन। श्लोक संख्या 12। नहीं बोल दीजिए। इति प्रकृणतां तेषां प्रियोऽत्यद्भुतदर्शनाः
स्त्रियोऽद्भुतदर्शना दर्शयामास शुश्रूषा दर्शयामास शुश्रूषा दर्शिता कुर्वतिर्विभुः स्वचिता कुर्वती विभुः इति प्रगृह्णतां तेषाम् इति प्रज्ञतां तेषां प्रियोऽत्यद्भुतदर्शनः स्त्रियोऽत्यद्भुतदर्शना दर्शयामास शुश्रूषा दर्शयामास शुश्रूषा दर्शितः कुर्वतिर्विभुः स्वचिता कुर्वते विभुः इति प्रगृह्णतां तेषाम् तेषां प्रियोऽत्यद्भुतदर्शनः स्त्रियोऽद्भुतदर्शना दर्शयामास शुश्रूषा दर्शयामास शुश्रूषा दर्शितः कुर्वतिर्विभुः स्वचिता कुर्वती विभुः इति प्रगृह्णतां तेषां स्त्रियोऽत्यद्भुतदर्शनः दर्शयामास शुश्रूषां अर्चिता कुर्वतिर्विभुः माता इति प्रगृह्णतां तेषाम् स्त्रियोऽत्यद्भुतदर्शनः दर्शयामास शुश्रूषां अर्चिता कुर्वतिर्विभुः शब्दार्थ इस प्रकार से इति इस प्रकार प्रगृह्णतां प्रशंसा कर रहे तेषां उनकी उपस्थिति में स्त्रियां अति अद्भुत अत्यंत विचित्र दर्शनः देखने में दर्शयामास दिखलाया शुश्रूषां आदरपूर्ण सेवा सुवर्षिता अच्छी तरह से अलंकृत पूर्वति करते हुए विभुः सर्वशक्तिमान ईश्वर भाषांतर और तात्पर्य अभय शरणारविंद पृथ्वीराज स्वामी श्री प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा श्री प्रभुपाद की भाषांतर इस प्रकार से जब देवतागण इस तरह से श्री भगवान की प्रशंसा कर रहे थे तो सर्वशक्तिमान प्रभु ने सहसा उनकी आंखों के सामने अनेक स्त्रियां प्रकट कर दी जो आश्चर्यजनक ढंग से भव्य लगती थी और सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से सज्जित थी और निष्ठापूर्वक श्री भगवान की सेवा में लगी हुई थी। तात्पर्य भगवान नर नारायण ने देवताओं की मिथ्या प्रतिष्ठा को दूर करते हुए उन पर अपनी अहेतुकी कृपा प्रदर्शित की। यद्यपि देवताओं को अपने सौंदर्य तथा अपनी संगिनियों के ऊपर गर्व था, किंतु श्री भगवान ने यह दिखला दिया कि पहले से उनकी सेवा असंख्य स्त्रियों द्वारा की जा रही है, जो देवताओं की किसी भी संगनी से कहीं अधिक सुंदर थी। श्री भगवान ने अपनी निजी योग शक्ति से ऐसी अद्वितीय सुंदर स्त्रियां प्रकट कर दी। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुषुन्मिलितन्मेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणि परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते
गोपेशा गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Would they read the translation? If they're not repeating, then I'll read. Generally, we read the translation and repeat. They do read here? Sometimes. तो हम एक जो भाषांतर है उसको दोहराइए। जब देवतागण इस तरह से श्री भगवान की प्रशंसा कर रहे थे तो सर्वशक्तिमान प्रभु ने सहसा उनकी आंखों के सामने अनेक स्त्रियां प्रकट कर दी जो आश्चर्यजनक ढंग से भव्य लगती थीं और सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से सज्जित थीं और निष्ठापूर्वक श्री भगवान की सेवा में लगी हुई थी। Hare Krishna. First of all, I thank all the devotees here, especially Prahlad Prabhu, who is a very old friend of mine. And of course, I have seen Dharmaraj Prabhu for a long time. And there's one more Grasta couple I saw in the morning, Subhadra Mataji and yes, yeah, Prema Prabhu. तो आप सभी का स्वागत है। खास करके मैं स्वागत करना चाहता हूँ श्रीमान प्रहलाद प्रभु जो मेरे पुराने मित्र है और साथ ही साथ धर्मराज प्रभु और प्रेमानंद प्रभु सुभद्रा माता जी का भी स्वागत है। Long time back, maybe in 2002, His Holiness Loknath Maharaj had arranged for a Maharashtra tour. So I was there with Subhadra Mataji and Premanjan Prabhu and our Ishtadev Prabhu in that trip for almost a month. तो बहुत साल पहले 2002 में लोकनाथ सर महाराज ने महाराष्ट्र यात्रा का आयोजन किया था। उसमें So it's almost 12 years back I visited this place. 12 साल का पहले मैं इस जगह को तो लगभग 12 साल के बाद प्रभु जी अब इस जगह को आए हैं। हाँ, पहले बार मैं जब when I first visited, it was almost about 30 years back when we had Jagannath Baldev Subhadra temple here. तो पहली बार जब प्रभु जी इधर आए थे तब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का छोटा मंदिर उधर था। 30 साल पहले की बात है। हाँ, बहुत छोटा सा था, फिर भी सब कुछ था। ये मंदिर कुछ भी नहीं था, full. It was only full of fields and Chandrabhaga was very small. We could cross and go to Pandharpur's darshan. तो ये जो परिसर है पूरा खेतों से भरा हुआ था और चंद्रभागा भी बहुत छोटी थी। हम उसको ऐसे ही पार कर जाते थे। The first time when I visited, I was really surprised. It was during. So people were saying to have darshan, it may take 2-3 days. तो लोग बोल रहे थे कि दर्शन करने के लिए 2-3 दिन लग जाएंगे। So people were standing in the queue. They were having nice bhajans. They used to cook really very inspired.
तो जो भक्त लोग थे वो पंक्ति में खड़े थे और उधर ही भजन करते थे। उसके बगल में ही थोड़ा सा भाकरी वगैरह बनाते थे और उधर ही प्रसाद पाते थे और बहुत ही सुखी आनंदी थे। ऐसे 2-3 दिन पंक्ति में खड़े रहने के लिए भी तैयार थे। I'd never seen something like that devotion anywhere. Continuously they are doing bhajans, they are having tulsi on their head and they're dancing and kirtan. It's so very wonderful. And I was surprised that they are going to stand for another 2 days to have just darshan of the Lord. It was so very wonderful. तो मैंने ऐसा जो भाव है, ऐसे जो दृढ़ता है कभी नहीं देखी कि वो कतार में खड़े हुए हैं और उनके माथे पर तुलसी है, भजन कर रहे हैं और 2-2 दिन राह Place intensely presence. Ashram in Vrindavan also. तो कल के भक्त जो बोल रहे थे बद्रिकाश्रम के बारे में और वृंदावन में भी एक बद्रिकाश्रम है। Have you anyone heard about any other Badrikashram? तो आपने दूसरा कोई बद्रिकाश्रम सुना है? There is something called as Dakshina Badrikashram. तो एक दक्षिण बद्रिकाश्रम भी है। कोई सुना है? किसने सुना है? Anyway. So हम उधर से आते हैं. I am coming from that place. तो वो जो स्थान है उसको दक्षिण बद्रिकाश्रम बोलते हैं, वो मेलकोट है। So how many of you have visited this holy place, Melkote? आप में से कौन गया है उधर? Okay, very nice, thank you. It is said in Narada Purana that Narada Muni visited this place called Tirunarayanpura or Melkote as it called now, and he was very, very delighted to visit that place. He goes back to Badrikashram and he tells his disciples Srila Vyasadeva to go check out this place. तो नारद पुराण में ऐसा बताया है कि श्रीमान नारद मुनि ने ये जो तिरुनारायणपुर है जिसको मेलकोटे बोलते हैं उधर उसकी यात्रा की और उनको बहुत ही अच्छा लगा। फिर वो अपने जो शिष्य है व्यासदेव के पास गए और उनको बोला कि आप जाकर एक बार उस स्थान को देख लीजिए। So Srila Vyasadeva, he comes here and he stays for a long time and he establishes Badrinarayan temple here, and that's how this place is called as Dakshina Badri. तो श्री व्यासदेव उधर आते हैं और बहुत दिनों तक रहते हैं और उधर बद्रीनारायण की विग्रह स्थापना करते हैं, आराधना करते हैं और फिर उसका नाम दक्षिण बद्रिकाश्रम हो जाता है। Right in front of the main temple, Chalvanarayana, there is Badri Vriksha, the berry tree, what Prabhupada calls. So even if you go to Badrikashram, you may not find the berry tree, but here in Melkote you will find the berry tree, Badri tree. तो उधर मंदिर के सामने ही भगवान के सामने ही बद्री का वृक्ष है। शायद हो सकता है आपको उधर जो बद्रिकाश्रम है उधर बद्री का वृक्ष न मिले, लेकिन इधर आपको मंदिर के सामने बद्री का वृक्ष मिलेगा। Right there is Badrinarayan temple also. तो उधर ही बद्रीनारायण मंदिर है। So I take this opportunity to invite you all people to visit Badrikashram, I mean Dakshina Badrikashram. तो ये इस अवसर पर मैं ये आपको न्योता देता हूँ कि आप सभी आ जाइए दक्षिण बद्रिकाश्रम का यात्रा करने के लिए। This place is very, very special. It is considered to be Vaikunta. Here, generally, as you know, Sri Vaishnavas, they have this Vaikunta Ekadashi celebration, very grand. But here in this place, there is no celebration of Vaikunta Ekadashi. Any guess why? तो ये स्थान बहुत ही विशेष है, ये वैकुंठ है। तो श्री वैष्णव वैकुंठ एकादशी में बहुत बड़ा उत्सव मनाते हैं, लेकिन इधर वैकुंठ एकादशी में बड़ा उत्सव नहीं मनाया जाता है। आपको पता है क्यों? Yes, क्योंकि ये वैकुंठ है। So इसमें वैकुंठ द्वार कुछ भी नहीं है, इधर यही वैकुंठ है। तो वैकुंठ है में इधर एकादशी बनाने का क्या मतलब है? There is no chance of having any austerities or this or that and things like that. This is Vaikunta. So here, though the Sri Vaishnavas have about 108 Diva Kshetram, of which 4 of them are important,
One is Tirupati, one is Kanchi, another Srirangam, and the Melkote, the fourth one. So in all the places they celebrate this festival, but especially in this place, they would not celebrate because they think this is Vaikuntha. तो इधर कोई तपस्या की कोई जरूरत नहीं। तो जैसे श्री वैष्णव उनके 8 दिव्य देशों में, उसमें 108. 108 दिव्य देशों में, उसमें से 4 महत्वपूर्ण हैं। उसमें कांची, तिरुपति, मेलकोटे और श्रीरंगम। तो हर जगह वो बड़े धूमधाम से ये वैकुंठ एकादशी मनाते हैं, लेकिन वो इधर नहीं मनाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये वैकुंठ ही है। हाँ। So is Vaikuntha में this Vaikuntha is very special that no Kali can enter in this place. तो ये वैकुंठ इधर कभी कोई आगमन नहीं कर सकता है। This place is been visited by all the devotees, by all the sages, all the Bhagavatas, whomever you can think about. Everybody has visited this place. तो इस स्थान में सभी भक्त, साधु, महात्मागण सभी लोग आए हैं। आप जिनका भी बारे में सोचेंगे वो सभी भक्त इधर आए हैं। Like in our Chaitanya Charitamrita, we find that Lord Chaitanya Mahaprabhu went to the Pancha Apshara Kshetra, Pancha Kalyani. So that is most probably this Melkote. तो जैसे चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि चैतन्य महाप्रभु पंचाप्सरा या पंच कल्याणी क्षेत्र को भेंट दिए या फिर यात्रा किए, तो वो स्थान मेलकोटे ही है। So this is a place where for the first time Vishnu Puran was spoken by Parashara to Maitreya. तो ये वही स्थान है जहाँ पर विष्णु पुराण बताया गया पराशर जी के द्वारा Maitreya को. मैत्रेय मुनि को। So this is a place where the Dattatreya, the Lord, gave the 4 Vedas, making as his disciples. तो यहाँ पर भगवान ने 4 वेद प्रदान किए। So in the beginning of this thing, we see that Ahalya, Prahlad, they all got the transcendental knowledge in this place only in Melkote. तो जो यहाँ पर भागवत ने लिख दिया है कि प्रहलाद वगैरह उनको ऐसे दिव्य ज्ञान उधर ही मिला है मेलकोटे में। So this place is very, very special, and especially there is a very nice pond. It's called as Kalyani. So this water is actually directly coming from the perspiration of the Supreme Lord when he came as in the incarnation of Varaha. तो यहाँ पर जो एक विशेष तालाब है या तीर्थ क्षेत्र है जिसको कल्याणी बोलते हैं, तो उसका जल साधारण नहीं है बल्कि वराह भगवान के स्वेद से वो निर्माण हुआ है। So in this place even Ganges comes and resides during this Falguni month every year. तो प्रति वर्ष फाल्गुन महीने में गंगा देवी उधर आकर वास्तव्य करती हैं। It is considered that 1 drop of this Kalyani water is equal to Ganges. तो ये ऐसे बताया जाता है कि ये जो कल्याणी का एक बूंद पानी गंगा के Worshipped his lotus feet with the Ganges water, and directly that water has fallen in this place. तो वो जो पानी है गंगा का जल है इसी स्थान पर गिरा था। What we know is generally due to Bhagirath's penance, she comes down, kind of thing to earth. But here, without dropping on the head of Lord Shiva or anything, from Vaikuntha to this place. So this place is very, very special, and I request you all people to come. There is a whole lot of section in Narada Purana which talks about the glories of this place. तो श्री नारद पुराण में इसकी बहुत महिमा गाई है, तो ये बहुत ही विशेष स्थान है। So as I was seeing this verse today about Narayan Rishi, how he invited all the Kupi and all the demigods to his ashram, because the ashram is incomplete without the visit of the devotees. So I request you all people to visit this holy place. Srila Prabhupada has created this very wonderful organization throughout the world. Manifested many, many beautiful damsels. तो भगवान बहुत ही दयालु है, तो हम देख सकते हैं कि भगवान के अपने दिव्य शरीर से अनेक सुंदर स्त्रियां, नृत्य करने वाली स्त्रियां प्रकट हुई।
He's a Yogeshwara, he's the most mystical person. He can do anything and everything for his devotees. तो भगवान योगेश्वर है, वो अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। So we should have that confidence that yes, I'm worshipping the Supreme Lord, I'm surrendered to Him, and He will do anything for me. I don't have to worry anything for myself. तो हमें विश्वास होना चाहिए कि मैं भगवान का भक्ति कर रहा हूँ और भगवान के ऊपर मेरा पूर्ण विश्वास है, मैं पूर्ण शरणागत हूँ, तो भगवान मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। So today we know is the day when Srila Prabhupada landed in Boston, New York. तो आज का ही दिन है जिस दिन प्रभुपाद न्यूयॉर्क में, बोस्टन में उधर उन्हें अपना शरण रखा था। Actually, people celebrate very big thing when they landed on the moon. They said that they conquered. This is a very big step in the mankind. Or say Columbus when he America. वो चांद सुनाने लगे थे। तो ये प्रभुपाद का अमेरिका में आगमन बहुत ही महत्वपूर्ण। अमेरिका जो महादेवी का राजधानी है और उधर दुनिया के सबसे खराब काम उधर होते रहते हैं। And Srila Prabhupada with know that he crossed this. He had no money, he had no contact, he had no disciple, nothing that you can think about materially Prabhupada had. तो प्रभुपाद बहुत ही संघर्ष का सामना करते हुए उधर उतरे और जब उनके पास न कुछ धन था, न अच्छा स्वास्थ्य था, न उनका आयु बहुत थी और कुछ भी भौतिक चीज़ों से वो अकिंचन थे, ऐसे अवस्था में वो उधर उतरे। So while traveling in the ship, you all know that he had 2 heart attacks and he just lived with eating some boiled potatoes and things like that. It was very difficult for Prabhupada, but when he landed, faith in the holy name. तो प्रभुपाद आपको पता ही है कि बहुत ही संघर्ष का सामना करते हुए उनको जैसे 2 हार्ट अटैक आए और प्रभुपाद ने जो वो जहाज था उसके ऊपर सिर्फ उबले हुए आलू या फिर कुछ ऐसे पदार्थ खाकर वो जी रहे थे और फिर जब प्रभुपाद उधर पहुँचे अमेरिका के पास तो उन्होंने जो कविता लिखी है उसमें प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान मुझे पता नहीं आप मुझे इधर क्यों लाए हैं, तो फिर भी आप जैसे मुझे नचाओ मैं नाचने के लिए तैयार हूँ। So Prabhupada says, I just only have faith in the holy name. तो प्रभुपाद बताए कि मेरा सिर्फ हरिनाम के ऊपर विश्वास है। So only thing that he carried was faith in the holy name and the first canto of 3 parts of Bhagavatam to this place. तो प्रभुपाद ने सिर्फ ये जो हरिनाम के प्रति श्रद्धा और विश्वास और इसके साथ श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 3 वॉल्यूम वही उतना ही लेकर प्रभुपाद गए थे। So similarly, we should also be very confident in our life. We have the holy name and we have Bhagavatam and we should not fear any time in our life. तो हमें भी बहुत ऐसे विश्वासपूर्ण या बहुत विश्वास होना चाहिए कि हमारे साथ भी श्रीमद् भागवतम है और साथ ही साथ हरिनाम में हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। So we have taken to Krishna consciousness, so we should not be fearful or we should not be worried any time in our life. तो हम कृष्ण भावना में है तो हमें जीवन में कभी भी डरना नहीं चाहिए। We should not be worried about ourselves. तो हम खुद के बारे में कभी सोचना नहीं चाहिए, चिंता नहीं होनी चाहिए। So many times we are worried what will happen to me in future. This devotee is not cooperating, he is becoming envious of me, these, that. So many problems we get into in our life. तो बहुत बार हम सोचते हैं कि मेरा आगे क्या होगा, ये भक्त मुझसे सहकार्य नहीं कर रहा है, ये मेरा द्वेष कर रहा है और मेरा आगे जाकर क्या होगा। We should have confidence that the Lord in the form of His holy name is with me always and I should not be worried about myself. So He has taken me so long and He will take me further also. तो हमें विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमारे साथ है हरिनाम के रूप में, तो उन्होंने मुझे यहाँ तक लाया है, वो मुझे आगे तक ले जाएंगे।
So we should not be worried about our future. We should be only worried how I can follow Srila Prabhupada's instruction in my life. तो हमें भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें सिर्फ इतनी चिंता करनी चाहिए कि मैं कैसे श्री प्रभुपाद के आदेशों का अच्छी तरह से पालन कर सकूं। Many times Maya puts this idea in our head, or what will happen to you as you grow old, what will happen to you, if this is not right, and that Maya may tell you many things, but we should be confident that Srila Prabhupada's instructions are good enough for me that I don't have to worry anything for myself. तो बहुत बार माया आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें डालेगी कि आपका आगे क्या होगा और कैसे होगा, तो लेकिन आपको डरना नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद के जो आदेश है उसके ऊपर हमें चलना चाहिए। So we see that Srila Prabhupada, having nothing, he goes to this place and he starts this Krishna conscious movement on the order of his spiritual master. And just within a span of 10 to 11 years, he created such a big revolution that we could not imagine. तो हम देखते हैं प्रभुपाद ऐसी अवस्था में कुछ भी नहीं होते हुए ऐसे स्थान पर गए और कुछ 10-11 सालों में उन्होंने इतना कुछ ऐसी क्रांति लाई कि हम कभी इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। Of course, he had many challenges also, but they were all overcome. उनके जीवन में बड़े संघर्ष भी रहे, लेकिन उन्होंने उसको पार किया। Similarly, in our life, we may have many challenges, but we'll also overcome if we follow Srila Prabhupada's instructions. तो वैसे ही हमारे जीवन में बहुत कठिनाइयाँ संघर्ष आएंगे, लेकिन प्रभुपाद की कृपा से, भगवान की कृपा से हम उसको पार करेंगे। So we should never worry about ourselves. तो हमें खुद की कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। We should only worry how I can serve Srila Prabhupada. तो हमें यही चिंता करनी चाहिए कि मैं किस प्रकार प्रभुपाद की सेवा कर सकता हूँ। If this idea is there in our life, then our life is successful. तो अगर ये आदर्शवाद हमारे जीवन में है तो हम सफल हो जाएंगे। This is what Prabhupada said. I just carried out the instruction of my spiritual master, and people say I'm successful. It's only because of this. तो प्रभुपाद यही बताते हैं कि मैंने सिर्फ मेरे जो गुरु महाराज हैं उनकी आज्ञा का पालन किया, और लोग बोलते हैं कि मैं यशस्वी हूँ। So we all have the same opportunity to follow instruction of Srila Prabhupada and cross over this ocean of nescience. तो हमारे सामने भी, सभी के सामने ये बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है कि हम प्रभुपाद के आदेशों का दृढ़ता से पालन करें और ये जो घोर सागर है, अज्ञान सागर है, इसको पार करें। So we see that no demigods or no one else can. They may try to put obstacles, but it will be failure in their life, and a devotee will be victorious in his attempt to go back to spiritual world. तो हम इधर देखते हैं कि देवता लोग या फिर कोई अन्य लोग इसमें बाधा डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो असफल रहेंगे, और भगवान की कृपा से हम हमारा गंतव्य भगवान का धाम प्राप्त करेंगे। Yes. So this small step or great step that Srila Prabhupada landed today in New York, Boston in America. So in a span of 10 years, the Krishna consciousness explosion was so much that it shook the whole of this universe. तो ये आज का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि आज के दिन प्रभुपाद बोस्टन में, न्यूयॉर्क में उतरे और उन्होंने 10 साल में पूरा दुनिया में क्रांति मचाई। The American government was afraid, the Russian government was afraid, even the Indian government was afraid of this movement. तो ये जो आंदोलन है इसके बारे में अमेरिका का जो शासन है या फिर रशिया का शासन है, भारत की भी जो सरकार है वो डरी हुई थी। People were in India, people were thinking all these devotees, they are all CIA agents and this and that and whatnot. तो भारत में बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे थे कि ये जो भक्त है CIA एजेंट है करके। So like that, this movement has created such a big revolution, and of course, after Srila Prabhupada, now his disciples are carrying out for past 30-40 years, and slowly it is growing and growing and growing. तो ये प्रभुपाद ने बहुत ही अच्छा बड़ा दिव्य भव्य आंदोलन बनाया है। प्रभुपाद के बाद उनके शिष्य कई सालों से इसको और भी बढ़ाते रहे हैं। Just like when I came here 30 years back, we had a very small temple,
And when I came about 12 years back, this temple was there. And when I come this time, I see the beautiful Kalyan Mantra, the Gurukul, and higher education. Many things have come up. It's so very wonderful. So much progress has been done. तो जब मैं पहली बार आया था तो छोटा मंदिर था, दूसरी बार जब आया था तो ये मंदिर बना, और अभी देखता हूँ कि अभी कल्याण मंडप है, गुरुकुल है, और उच्च शिक्षा का विभाग है, तो बहुत कुछ ऐसे ही इसका निर्माण हो रहा है. So ISKCON is growing throughout the world very gradually, very systematically. There's no doubt about it. तो पूरे विश्व में इस प्रकार इसका धीरे धीरे और बहुत ही अच्छी ढंग से बढ़ रहा है. So we are all very fortunate to be part of this organization, and by the end of this, we'll also reach our destination of going back to Godhead. तो हम बहुत ही सौभाग्यशाली है कि हम इसके सदस्य हैं और इसके अंग हैं, और इसके साथ ही साथ हम जीवन के अंत में भगवत धाम प्राप्त करेंगे. So we have to follow just the 4 regulative principles and chant a minimum of 16 rounds every day very nicely. तो हमें सिर्फ खाली 4 नियमों का पालन करना है और 16 माला का जप अच्छी तरह से करने का प्रयास करना है. So we should have faith in this holy name, in Srila Prabhupada's system, and carry on in our life without being worried or fearful. तो हमें ये पवित्र नाम के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए, और प्रभुपाद की जो व्यवस्था है इसको पूरे जीवन में अच्छी तरह से हमारे जीवन में इसको उतारना चाहिए. So I thank you everybody for giving me this opportunity to be with you people. If you like to say something or ask anything. तो मैं सभी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया. तो किसी को कुछ कहना है या कुछ प्रश्न है? Ah. About Ramapriya. So the main deity Chalvanarayana himself is called as Ramapriya. He has many names. One of the names is Sampat Kumara, Chalvanarayana, and Ramapriya. He got this name Ramapriya because this deity was being worshipped by Lord Ramachandra. So it was very dear to him. That's how his name is called as Ramapriya. And when they installed this deity here and they called him as Ramapriya, immediately Lord Hanuman also comes to this place and is just behind the deity as, Hanuman there. तो ये जो मुख्य विग्रह है जिनको चिल्लनारायण बोलते हैं, उनके अनेक नाम हैं, जैसे संपत कुमार, और उनको ही रामप्रिय बोलते हैं. तो ये भगवान रामचंद्र के बहुत ही प्रिय विग्रह थे, इसलिए उनका नाम रामप्रिय बन गए. और उसके बाद हनुमान जी भी उधर आए और उधर खड़े हैं विग्रह के पीछे. You want to know the whole story, how it... Come again? 10 minutes. Okay. I'll just, in a short. It so happened that Lord Ramachandra gave his Vigraha to Vibhishana, right? So he was bereft of worshipping the deity. At that time, Brahma Dev comes and gives his worshipable deity to Ramji. And Ramji would be worshipping that deity. So that's how this deity gets the name Ramapriya. तो प्रभु रामचंद्र ने जो अपना विग्रह विभीषण को दिए थे, और फिर वो उनके पास कुछ विग्रह नहीं थे, तो ब्रह्मा जी ने उनकी जो विग्रह रामचंद्र जी को दिए, और फिर वो विग्रह रामप्रिय कहलाए. So Lord Ramachandra was worshipping this deity. After that, his son Kusha's daughter Kanakamalini was very attracted to this deity, and she was married to Yadushekara. And that's how it comes to the Chandra Vamsha, from Surya Vamsha to Chandra Vamsha. And Krishna Balram would get this opportunity to worship this deity in Dwaraka. And later on, Balram and Krishna, they bring this deity and establish here. तो ये जो विग्रह है पूरा सूर्य वंश से लेकर चंद्र वंश तक आए हैं. जैसे रामचंद्र सूर्य वंशी है, और उनके जो पुत्र कुश है उसकी पुत्री थी कनकमालिनी, तो उसको ये विग्रह बहुत प्रिय थे. और उस प्रकार ये सूर्यवंश से चंद्रवंश में आ गए, और फिर बाद में
खुद कृष्ण बलराम ने इनकी सेवा पूजा की और उन्होंने इसकी स्थापना की है। It's a very long story and nice story about all these things. तो इसकी बहुत बड़े विस्तृत कथा है। Lord Balram did not participate in Kurukshetra war, right? So he had Gohatya dosha, so he had to go on for a pilgrim. That's how he goes to all these places and comes to this place. So when he comes to this place, then he sees the main deity, Chalvanarayana, resembling the deity where they are worshipping in their house. Right? When he goes back, along with Krishna Balram, they come back and establish this deity Ramapriya here in this place. तो बलराम जी उन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया और वो परिभ्रमण यात्रा कर रहे थे, तब वो उधर आए तो उन्होंने देखा कि ये जो विग्रह है उनके विग्रह के जैसे ही है। तो फिर उन्होंने जाकर उनके विग्रह इधर आकर स्थापित कर दिए। He is called Ramapriya. उनका नाम राम जी है। You told the point like we have to follow what Srila Prabhupada says as chanting minimum 16 rounds and also following the four regulative principles. But once I was hearing Srila Prabhupada's disciples lecture, wherein Srila Prabhupada was also telling that if we don't preach in this life or if we don't distribute books or preach people, then it would be selfish service. So, can you please elaborate on this point? Yes, thank you so much. So how long it takes to chant 16 rounds? 2 hours, 2 hours. So how many hours you are left in the day? 22, 22 hours. So say another 6 to 8 hours you sleep and you eat and things like that. Still how many hours you have? 18. Yes. So in that time you can always preach, you can read and things like that. This goes hand in hand. Personally, just like only when I eat food I get strength, then I can do something, right? So this following four regulative principles and chanting Hare Krishna 16 rounds minimum is very essential. You know, it's fundamental. It's a very principal thing. And after doing this, we have so much time, we should certainly distribute Prabhupada's book and we should certainly preach, serve the deities, serve the Vaishnavas and things like that along with this. But not at compromising this. We should never break four regulative principles in our life, right? And we should never sleep without chanting our 16 rounds. Some days may be little like Janmashtami and things like that, may be very tight, but still we should not, give up our chanting. It only takes 2 hours, not more, right? Still you have so much time. So both the things we should do. Without doing this, we cannot do other services long time. 16 is minimum. If you are not eaten food, you cannot work long, right? You feel very tired like that. So we should chant very nicely, very heartfully the holy name and then do all other services. So, okay? Thank you. Nice question. प्रश्न था कि रोहित ने बताया था कि जब प्रभुपाद का जो आज्ञा है उसका पालन करना चाहिए, जैसे जप करना चाहिए, 4 नियमों का पालन करना चाहिए। तो प्रभुपाद के बहुत सारे शिष्य ऐसे बताते हैं कि हमें प्रचार भी करना चाहिए और भगवान के नाम का और सेवा भी करनी चाहिए। तो उसके बारे में प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ने चाहिए, उसके बारे में आप समझे करके। तो रोहित ने बताया होता है कि जैसे कि हम जप करने के लिए 2 घंटा लगता है तुला माला करने के लिए, और बाकी हमारे जो शारीरिक आवश्यकता है, नहाना वगैरह या सोना, उसके लिए 6-8 घंटा पकड़ दीजिए। तो बाकी बचा हुआ समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये सब सेवा ही करते रहना है, जो भी जिसमें ग्रंथ वितरण भी आ गया और प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ना भी आ गया, वैष्णव की सेवा है, विग्रहों की सेवा, इस प्रकार हमें पूर्ण व्यस्त रहना चाहिए। तो दोनों बातें साथ साथ चलनी चाहिए। तो ये जो जप है 16 माला का, वो किए बिना हमें कभी सोना नहीं चाहिए और 4 नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है और उसके साथ जो भी बचता समय है उसमें हमें सेवा करनी चाहिए। Thank you. Sorry.
uh, when Sripad Ramanujacharya, he visits this place, so there'll be the main deity, and in his dream he gets to know that the Utsav Vigraha would be in Delhi, taken by Sultan. So then he goes all the way from Melkote to Delhi. Of course, those days they didn't have any train or bus, or he goes by only walk. So he goes to that place. तो जब श्रीपाद रामाचार्य थे भारत पर, तब उस वक्त जो सुल्तान दिल्ली का था, उसने जो उसका विग्रह है वो लेके गया था दिल्ली में। तो रामाचार्य चलकर, क्योंकि उस वक्त कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी ट्रेन जैसे, तो चलकर उधर गए। So when he goes to that place and seeing Sripad Ramanujacharya's demod, the king is very impressed, and he opens a godown full of stolen deities. Vigrahas are there. But Ramanujacharya would not find the deity of his, what he was looking for in that godown. तो जब रामाचार्य उधर गए तो वो जो सुल्तान था बहुत प्रभावित हुआ, और उसने अपना गोडाउन पूरा खोल दिया, इसमें बहुत सारे विग्रह थे जो सभी चुरा कर लाया था। तो लेकिन रामाचार्य को जो अपने प्रिय विग्रह है उधर नहीं मिले। So as he was coming out in the Antapura, in the inner chambers, he finds that the king's daughter, a small girl, she would be playing with one deity. तो जब वो आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि अंतपुर में वो राजा की पुत्री एक विग्रह के साथ खेल रही थी। So he understands that's the vigraha that he wanted, and he asks the king. तो वो समझ गए कि यही विग्रह है जो मुझे चाहिए, और उन्होंने राजा से पूछा। The king asks his daughter to give this deity to him, but she is very attached to this deity. She thinks it's a doll, and she says to her father that this doll is very special, I will not give. And the king says, what is so special? I have so much, you can take many more, you can give this to this saintly person. But she says, this deity, this doll is very special, because if I ask him to come, he'll come. If I ask him to sleep, he'll sleep. If I ask him to sing, he'll sing. Whatever I say, it's the only doll which will accept me. So I cannot give this doll to anybody. तो राजा ने राजा की पुत्री को बोला कि ये आप विग्रह दे दो, तो वो बोली नहीं, तो वो उसको एक खिलौने के भांति, तो बोले कि ये बहुत ही विशेष खिलौना है। राजा बोले कि गोडाउन में बहुत सारे और भी खिलौने, इसमें से कोई दे सकते हैं। तो वो बोले नहीं, इसमें खास बात ये है कि जब इसको मैं बोलती हूँ कि आप सो जाओ तो सो जाता है, इधर आओ तो आता है, जो बोलती हूँ वो करता है। So this I cannot give. Then the king is in perplexed, and he tells Sripad Ramanujacharya, I cannot help. See if you can call your deity. If he comes, you take and go. तो वो पुत्री देने के लिए तैयार नहीं थी। वो राजा बोला कि अभी मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, आप ही देखो, अगर आप कुछ कर सकते हैं, आप अगर बुलाएंगे वो आएंगे तो आप लेके जा सकते हैं। So Sripad Ramanujacharya composes very nice, very sweet prayers to the Lord. He calls him as Chalva Pillai. Chalva means beautiful, Pillai means small kid. So just like Nanda Baba is calling Krishna, so like that Ramanujacharya is having this parental, fraternal relationship. He calls the Lord, and the Lord jumps and comes on his lap. तो रामाचार्य उसके बाद बहुत ही सुंदर स्तुतियाँ गाते हैं, चलो करके बताते हैं कि बहुत ही छोटे बाल होते, और जब ये जो उनका जो भाव एक बच्चे के प्रति रहते हैं, माता पिता का भाव होता है, उस भाव से पुकारते हैं, तब वो जो विग्रह है वो दौड़ के आते हैं और उनके गोद में बैठ जाते हैं। Then Sripad Ramanujacharya brings this deity, and of course she cannot be without this deity. She's crying all the time, and she also follows Sripad Ramanujacharya, and of course she is Lakshmi, baby Nachiyar. Though she was born there, she is baby Nachi, is Lakshmi. She also comes along with Sripad Ramanujacharya, and she is there always serving the Lord. तो रामाचार्य जब वो विग्रह को लाते हैं तो वो छोटे बच्चे हैं, वो भी उनके सिवा नहीं रह सकते हैं, फिर वो भी आ जाते हैं रामाचार्य के साथ, क्योंकि वो कोई स्त्री नहीं है, तो वो साक्षात लक्ष्मी है। So today also there's a festival conducted as Delhi Utsav once in a year.
remembering आज this. गए वो साथ में एक दिन दिल्ली उत्सव मनाया जाता है। Yes. Hare Krishna. The whole Narada Purana, one section, is full of stories and stories and stories. Not only the deities, about all the devotees, how this devotee went back to spiritual world, how this devotee, how he became devotee, how the robbers they came and how they became devotees. So many stories, so many Upa Purana, Kathas are there in this section about this one place. तो ये स्थान के बारे में नारद पुराण में बहुत सारी कथाएं हैं कि कैसे उधर के भक्त हुए कैसे आदान प्रदान किया, तो पूरा कथाओं से भरा हुआ है नारद पुराण में। Recently I was reading one book, and this is a very nice instance. Srila Prabhupada, when he was in Vrindavan, he established his deity, Gaurnita deity, and he established Srila Bhakti Siddhanta Saraswati deity and his own deity, right? So Prabhupada was in Bombay. At that time, one devotee, Sri Vaishnava devotee, Sampath Kumar Bhattacharya from Bangalore, who had established Radha in Hyderabad temple inauguration, they all helped. So this devotee was very much concerned about Prabhupada. Prabhupada was very ill. This was in 1977. So he takes a flight from Bangalore to Bombay those days and wanted to see Prabhupada. तो ये 1977 की बात है जब प्रभुपाद ने अपने प्रिय विग्रह गौरनिताय और कृष्ण बलराम वृंदावन में स्थापित किए और साथ ही साथ श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का विग्रह और खुद का विग्रह जब स्थापित किया, तो ये श्री वैष्णव जिन्होंने हैदराबाद के जो मदन मोहन थे उनकी स्थापना की थी, तो वो प्रभुपाद को मिलने के लिए हैदराबाद से मुंबई आए। Bangalore से. बैंगलोर से Mumbai. So he has a personal interview with Prabhupada, and he tells Prabhupada that if you have your vigraha, then people will come and pray, then you will have to take all the sin of these people, and generally it is not recommended to have your deity when you are living. तो उन्होंने बताया कि प्रभुपाद की सेहत बहुत अच्छी नहीं थी, तो पता है कि आप जब अपना खुद का विग्रह रखते हैं और लोग आसपास प्रार्थना करते हैं, उन लोगों के आप सभी पाप कर्म आपको लेने पड़ते हैं, तो ये बहुत अच्छा नहीं है कि जब आप जीवित है तब आपका विग्रह रखा जाए। So Prabhupada tells him, yes, I understand. So I am here to take the sin of all the people only. प्रभुपाद बोले कि हाँ मैं समझता हूँ, जानता हूँ, लेकिन मैं इधर इन सभी लोगों के पाप कर्म लेने के लिए हूँ। Then this person says, Sampath Kumar, he says, I am just a priest, I cannot say anything, and he comes back. तो ये जो ब्राह्मण लोग गए थे संपत कुमार, वो बोलते हैं कि मैं एक पुरोहित हूँ और वो वापस आ जाते हैं। So sometimes devotees think this is something is unprecedented, because in that book I was reading, Prabhupada's disciple has written, and he's saying it is unprecedented, but actually it is not so. During Ramanujacharya's time, when he was in Melkote, the devotees didn't want to leave him. So at that time he made a murti of his own, and he concentrated all his energy, his own presence there. तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये अपूर्व घटना है, इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन ऐसे हुआ है कि जैसे कि श्रीपाद रामानुजाचार्य मेलकोटे में आए थे और वो उधर से जाना चाहते थे, तो लोग नहीं चाहते थे कि वो छोड़ के जाए, तो उन्होंने खुद का विग्रह बनाया और उसमें अपना पूरा शक्ति या फिर अपने को संचारित किया है। So even when Sripad Ramanujacharya was there, his deity was also there here in Melkote. तो जब रामानुजाचार्य धरातल पर थे, उसी वक्त उनका विग्रह उधर मेलकोटे में था। So Prabhupada has not done something of his own, anything. He has simply followed the previous acharyas always. तो प्रभुपाद ने अपने मन से कुछ नहीं किया, उन्होंने जो पूर्व के आचार्य हैं उनके चरणों का अनुगमन किया है।
Just like we have this traveling Sankirtan party where we have the deities in the buses, where temples on the wheel. This looks like it was started by we ISKCON people. तो जैसे कि ये हम्म, संकीर्तन बस यात्रा है जिसमें विग्रह रहते हैं गाड़ी में या फिर बस में, तो लगता है कि ये ISKCON वालों ने चालू किया है. But actually, like our Chalvanarayana, they were actually bought by the 4 Kumaras from Brahmaloka in a caravan like this. The whole Vimanam is with all the paraphernalia, with all the entourage. They were preaching, and that's how they bought this deity and left it here. तो ये जो चलो नारायण विग्रह है वो 4 कुमार हैं. Brahmalok se. हाँ, तो ब्रह्मलोक से एक विशेष विमान में बिठाकर उनको लाया. So whatever Prabhupada has done, he has never deviated from the scriptures or the previous acharyas. He has just presented us and we don't know, that's all. So if we simply follow, we'll be very, very safe and lucky. तो हमको पता नहीं है कि प्रभुपाद ने जो भी किया है वो शास्त्रों के अनुसार ही किया है या पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार ही किया है. हम खाली उसको जानकर फिर उनका अनुगमन करते हैं तो हम बहुत ही सुरक्षित और अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं. Just like Sripad Ramanujacharya, he gave the holy name for everybody's benefit, right? So similarly, Sri Prabhupada has come and given the holy name to the whole of this world for our benefit. And his actions are very, very special. Even if he can simply stick on to his dhoti, as he says, will be very successful in life. तो जैसे कि रामाचार्य ने जो हरिनाम है सबको दिया, उस प्रकार प्रभुपाद ने पूरे विश्व को हरिनाम दिया. और इस प्रकार प्रभुपाद जैसे बोलते हैं कि अगर हम उनके धोती को पकड़े रहेंगे तो बहुत ही हम भाग्यशाली रहेंगे. So we should never be confused or attracted to any other process or anybody other than Srila Prabhupada in our life. We are the most luckiest, believe me. तो हम बहुत ही भाग्यशाली है, इसलिए हमें प्रभुपाद को छोड़कर और किसी से आकर्षित नहीं होना चाहिए, किसी व्यक्ति या संस्था से. Yes, thank you. Like to say something, Prabhu? Anything else? Okay. Srila Prabhupada ki, Gandhara Srimad Bhagavatam ki. श्रीमान आनंद गौरांग प्रभु जी की